Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 17th of October. Through this video session, I'll be covering the important news from the Hindu and Indian Express. These news is going to be relevant for both civil services, prelims and mains examination. And if you're appearing for any other government and state PCS examination, this session is going to be fruitful there as well. So without any further ado, let's get started. And before I begin this session, just to give you the highlights of the news that I'll be discussing with you for today. For today, the first important news is about the angel tax and the recent guideline that is there from the CBDT. The second important news talks about the recent referral of the Supreme Court with regards to the electoral bond. Electoral bonds को लेकर के Supreme Court ने 5 bench constitutional bench को actually refer किया. The third important news talks about the rupee at all-time low. We'll see the details to this as well. The second last, that is, 2 laboratories in India will take the majority of syrup test. There have been concern with regards to the cough syrup that is manufactured in India. There was death that was reported in Gambia. And we'll conclude the session with editorial that talks about the Indian Himalayan region and how the EIA, that is Environmental Impact Assessment, is going to help in this regard. So this is all on today's discussion. So let's get started with the detailed discussion one by one. And starting from the first news, that is the angel tax for startup. Government of India ने angel tax को लेकर के खास करके जो startups हैं उनमें exemptions या कुछ rules जो हैं income tax के act के उसमें provisions में changes किए. So the nodal body, that is the Central Board for Direct Taxes, CBDT ने angel taxes में scrutinizations में कुछ changes की हैं. वैसे startups, the startups which are actually being recognized by the Department of Industrial Promotions and Internal Trade, they will be given certain exemption in their scrutinization. This is what the government of India has actually said through the Central Board of Direct Taxes. Now, what are the details in terms of angel taxation? अगर angel tax की बात करें, क्या होती है angel tax and how does it work? So angel tax are the tax fund that is raised by the startup. और ये अगर ये excess market fair value exceed करती है, then there's certain tax that has been imposed. Current में this rate is 30.6%, subject to certain revision that is made by government. ये changes की जाती हैं upon budget. जब budget present होती है वहाँ पे government actually come up with the changes. Now this particular is actually applicable for the startup who receive the external investors. तो उनमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग में ये चीज़ें एप्लीकेबल है. Now the term angel tax was actually introduced in 2012 and aimed to prevent the use of undisclosed money which is held by the companies. Now before I detail out the other details, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये एंजल टैक्सेशन की कॉन्सेप्ट इंडिया में कब से स्टार्ट हुई और क्या इसके प्रोसेस रहे हैं. So this started in March 2012, right? This was the inceptions of the taxation. I'll be writing timeline here so that it is easy for you to understand. This started actually in March, right? उसके बाद March फिर 2013 में inceptions हुई angel tax regime की, and in 2018, this is 2013, then 2018 में angel tax में जो startups हैं उनके लिए exemptions provide की गवर्नमेंट ने, और 2023, right, March 23, the proposed amendment to the angel tax were brought, right? So this aimed to discourage the part of laundering or unaccounted money that is coming to unlisted route, और ये किसी ना किसी तरह से disguise as capital investment, right? So to ensure that frauds are not there, market में healthy competitions हो competitors के बीच में, and the government is ensuring that things are working where the startup जो actual genuine startups हैं उनको collaborate करके उनके efforts को recognize कीजिए. Now, what are the angel distress that is there? To understand the things better, you should know these facts that is there. Now, definitions की अगर बात करें angel investors की, this is mentioned in the section 56 of the IT Act, जहाँ पे 30% taxations की गई है, और 39 of the startups of 2860 have been surveyed by the local circuit, and they find कि इन सारे startups को notice भेजी गई है, right? Cash dry up हो रही है in terms of 2017 and 2016. The cash drying up for the angel investor altogether. Now the other details that you need to know about the new taxation drive on the startups, the government has actually said that the CBDT has set up process for assessing the startup companies, which has been recognized by the Department of Industrial Entry.
तो इनको इनके प्रोसेस में कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं गवर्नमेंट ने कहा है दैट दे वोंट बी हैविंग द एंजल टैक्स रूल टू दीज कंपनीज, दीज स्टार्टअप एक्चुअली, ये जो स्टार्टअप्स होंगे उनमें ये एप्लीकेबल होंगी बिकॉज दीज वेर ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द DPIIT. Now this directive is issued by the central government through the income tax department, और इन्होंने कहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनमें 56 सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के वो एप्लीकेबल नहीं होंगे and they would be exempted on this part. Now, two scenario actual government ने consider किया है, खास करके अगर बात करें CBDT की, that is the Central Board for Direct Taxes. Right, Central Board for Direct Taxes, they have said that the startup is scrutinized on section 56(2) of the Income Tax Act, or no verification will be done for the recognized investor, right? Or you can say the startup which is actually second. If the startup is scrutinized for multiple issues including 56, तो दोबारा उसकी scrutinization नहीं की जाएगी. So these are the two exemption part which is provided for the new startup that is operating in India. Now changes क्या क्या किए गए हैं इस बार के बजट में? If you see the Finance Act, for any changes that has been brought in is only through the Finance Act, और इस बार के Finance Act में certain sections में amendment की गई है. Under this, the unlisted company receiving the investors amount, जो कि रेसिडेंट भी हों या फिर आउट रेसिडेंट भी हों, उनके लिए भी टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड. सो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर ऑल्सो. सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. एंड हाउएवर द स्टार्टअप जो कि रिकॉग्नाइज हैं DPIIT से, उनको सिर्फ एग्जाम्पशंस दी जाएंगे. द फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू रूल फॉर फेयर मार्केट वैल्यू बेस्ड वैल्यूएशंस एंड यूटिलाइज कंपनी ईजिंग द सर्टेन कंसर्न. So this is to ensure कि एक healthy competitions हो market में, right? So a healthy competition should be there among the startup, and they should ultimately ensure that इनकी जो contributions है वो इंडिया के GDP पे हो, इंडिया के national growth पे हो, right? Now moving ahead with the other news, that is Supreme Court has come up with a constitutional bench with the electoral bond cases. काफ़ी plea file की गई हैं electoral bond के जो anonymous फंडिंग है उसको लेकर के. तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैज एक्चुअली सेड दैट 5 जज की बेंच कम से कम इसे देखेगी और इसके बारे में हियरिंग करेगी एंड फर्दर डिटेल्स विल बी कमिंग अप. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो? अगर बेसिक्स की बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड से, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं दिस इज हाउ द इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली लुक लाइक, राइट? सो दिस इज द इलेक्टोरल बॉन्ड. So now coming to the electoral bond details, right? Electoral bonds are the monetary instrument that is used by the group and they can send money to the various political parties. Suppose कोई individual है, this is an individual, he can reach out to bank and he can say the bank that मुझे इस किसी भी political parties की, don't need to say the name, he want a bond to be created, electoral bond ये create करके, ये electoral bond create होने के बाद he can transfer this bond to other political parties and this political parties can again reach out to bank and he can redeem that particular amount, right? तो बहुत ज़्यादा suspicions transparency ना होने की वजह से problem raise की गई है and the bond system was introduced in 2017 actually, right? और इसे as a money bill introduce किया गया था. Now what is money bill? Money bill something that only required the consent of लोक सभा, राज्यसभा में यहाँ पे कोई रोल नहीं होती है, जिसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा concern raise किए हैं. Now, the earliest hearing that is there, Prashant Bhushan is an individual who is an advocate for ADR. ADR company, basically they are the NGO which is working for the Association for Democratic Reform. इन्होंने कोर्ट को बताया that they need to decide the matter before 2024 लोकसभा के जो इलेक्शन स्केड्यूल हैं उससे पहले गवर्नमेंट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्चुअल में गाइडलाइन देने की ज़रूरत है. There should be some guideline that should be given so that the process should be on that. And the petition has actually filed focus for anonymous donation which is there for the political parties, and they said that it's a violation of article 19, 14 and 21 which should be strictly taken into considerations. Now और क्या क्या challenges हैं electoral bonds को लेकर के? First and foremost is transparency. As I've told you, जो भी senders हैं, I mean the individual and who is sending to political parties, ये दोनों की चीज़ें disclose नहीं की जाती हैं. Potential for money laundering is there, reduce accountability, undermining the democratic principle and legal challenges which is there associated with the electoral bonds, right? So these are the major concerns. Now, rupees at all-time low against the dollar. This is something again important for you to know कि रूपी जब एक्चुअल में फॉल करती है अगेंस्ट डॉलर,
if you see INR which is falling against the US dollar, तो क्या क्या इसके रिपरकशंस होते हैं, I'll tell you this in a while. Now पहले रूपी फॉलिंग के क्या क्या कारण रहे हैं. फर्स्ट आई मीन द मेजर इंसिडेंट इज द यूएस फेड. यूएस की जो फेड है उसके रेट्स में जो चेंजेस की गई है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस में चेंजेस की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, राइट. सो यूएस फेड इज अदर प्रॉब्लम एंड इवन दैट हैव प्रॉम्प्टेड इन्वेस्टर्स टू फ्ली फ्रॉम द एसेट्स. और रिसेंट में जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइजेस में जंप देखी गई है, एशियन इकोनॉमीज में इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रही है, विच हैज़ एक्चुअली deteriorated the part of valuations of Indian rupee, that is INR. Now क्या impact होंगे, खास करके जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है that has declined to 14.15. इतनी डिक्लाइन देखी गई है जो टोटल रिजर्व थे उसमें. एंड द वैल्यूएशन इज ऑल्सो देयर. आरबीआई ने इंटरवीन किया है दैट समथिंग अदर आई मीन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ और डेटोरेशन देखी जा सकती हैं. ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट is expected to widen by $130 billion, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ $87 billion हुआ करती थी पिछले साल. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं वीकनिंग ऑफ रूपी के, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है. प्रीलिम्स स्पेसिफिकली फॉर CAS जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, CDS के एग्जामिनेशन है, CAPF के एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट इज द इम्पोर्ट इन्फ्लेशंस. इम्पोर्ट बढ़ती हैं, उसके इन्फ्लेशन के प्रेशर्स होते हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली वाइडन, राइट. फॉरेन डेप्ट में बर्डन बढ़ेगी बिकॉज फॉरेन डोमिनेशंस में पेमेंट करनी होती है. टूरिज्म इज समथिंग दैट इज एक्चुअली अप्रिशिएटेड. तो इंडिया में टूरिज्म इस वजह से बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग कम आती है. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज बीन लूजिंग आउट. और एक्सपोर्टर्स डायलेमा भी बढ़ती है बिकॉज द चीपर गुड्स दैट इज दे वर एक्चुअली बाइंग, they have to pay higher amount for this, right? So these are the consequences of weakening of rupee. Now laboratory testing for cough syrup, this is an important point जो कि concern raise की गई थी गैम्बिया में. गैम्बिया एज अ कंट्री जहाँ पे एक्चुअल में चाइल्ड डेथ को लेकर के कंसर्न रेज की और इसे WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया था और इंडिया से स्पेसिफिक क्वालिटी चेक QC के लिए कहा था दैट दे नीड टू कम. तो उसी कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे आर कोलैबोरेटिंग ताकि एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जा सके कफ सिरप्स को लेकर के. Now the cough syrup testing sample, the union government has issued the notifications this year and they've said that June 1 will be the time. They said कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं कफ सिरप की उनकी एनालिसिस जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं उनमें ही की जाएंगी. And 15 laboratories are there from the central government and from the state government. And these were as per the adherence to the WHO guideline which is there, right? Now the other alarming situation which is there, as I've told you, Gambia में कुछ incident हुए हैं जिसने concern raise किया था. 66 children की death report की गई थी, right? And why it was reported? Because कुछ important basically chemical ऐसे हैं जो कि it's not, it is not something which is suitable for it. This is diethylene glycol और उसके बाद ethylene glycol. तो इसकी कमी करने के बाद की टोटल कंजप्शंस में. एंड WHO has also suggested their recommendations, a proportion of it in the cough syrup. Now proposed amendments की अगर बात करें, the actually if you see अगर India is a country which is third in terms of manufacturing of the cough syrup for any drugs in the country. Amendment that has been brought in, खास करके manufacturing license की बात करें, that has been brought in. मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट को जॉइंटली इंस्पेक्ट करनी होगी एंड द कोलैबोरेशन विल बी देयर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. एंड सिट्सको हैव आल्सो इंक्रीज देयर सैंक्शंस. पिछले 10 सालों में इन अ डिकेड दे हैव कम अप विद द इंक्रीज सैंक्शंस ऑल्सो. नाउ मेजर्स और क्वालिटी चेक के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके साथ साथ जो सिट्सको हैं दे हैव कम अप विद द कोलैबोरेशंस एंड दे सेड दैट सर्टेन SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या फिर जो क्वालिटी चेक है वो इधर किए जाएंगे. एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1945. सिट्सको हैव द नंबर ऑफ बैचेस व्हिच इज कमिंग. सेंटर लेबोरेटरीज मुंबई में और फिर जो फूड ड्रग लेबोरेटरी है गुजरात में, दे विल बी एक्चुअली कंडक्टिंग द टेस्ट टू इंश्योर दैट अ क्वालिटी चेक इज डन. Now, moving ahead with the editorial for the day, that is the Indian Himalayan region. और इंडियन हिमालयन रीजन में क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको समझेंगे. EIA is again an important topic for general studies paper 3 in the mains examination.
So what I'll be discussing first, we'll see the basis of the EIA. EIA in India किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से इसकी इंसेप्शंस हुई, कंसर्न क्या है और द वे फॉरवर्ड. Now EIA की अगर बात करें, basically we are discussing on the Himalayan region, Indian Himalayan region. यहाँ पे जोग्राफिकल ये एरिया काफ़ी डाइवर्स है, सेंसिटिव एरिया है और सारे स्टेट्स खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट के जो इस रीजन में फॉल करते हैं वो एक सेंसिटिव एरिया. It is characterized by the high biodiversity, fragile environment है, subsistibility इनकी काफ़ी हाई है. We have seen the flash flood, landslide. अगर recent examples की भी बात करें, seen हिमालय और सिक्किम में जिस तरह से landslides देखी गई, heavy rain that is there. This is something, it's a classical examples of the thing worsening. And due to ecological importance ये ज़रूरी है कि जो EIA है इस region में, खास करके Indian Himalayan region में, the EIA should be taken with the foremost priority. Now EIA अगर हिमालयन रीजन की बात करें, which are the area which is there, this include the north eastern region also, like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड इवन इंक्लूड वेस्ट बंगाल टू सर्टेन रीजन. Now basic of EIA की बात करें, I think most of you must be aware of the definition of EIA. कुछ बेसिक्स बता दूँ. UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स ने गाइडलाइन दी है कि ये ऐसी टूल है, EIA एक ऐसी टूल है जो कि एनवायरनमेंट, दिस इज द वन एस्पेक्ट, देन वी हैव द सोसाइटल एस्पेक्ट एंड देन वी हैव द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. इन तीनों की एमालमेगेशन से EIA एक्चुअल में बनी है, राइट. सो इट हैज़ अ प्रपोज्ड जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज, गाइडलाइन, डेवलपमेंट, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं. And EIA is a process where comprehensive, reliable data is taken into considerations with appropriate relevant information regarding the project. Now EIA in India की अगर बात करें, when it was actually there, 1976 to 77 में इसकी conceptualization की गई थी by the Department of Science and Technology, and this was backed by the planning commissions, right. उसके बाद further development हुए. 1994 में Ministry of Environment and Forest and Climate Change ने एक्चुअली गाइडलाइन दी और उसके बाद 2006 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए. 12 अमेंडमेंट विच वाज ब्रॉट इन एंड द रीसेंट चेंजेस विच हैज़ बीन ब्रॉट इन 2020 एक्चुअली, इसको लेकर के काफ़ी कंसर्न रेज की गई है. इट हैज़ इम्पैक्ट द कंसर्न रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल कंसर्न, राइट. सो दिस इज ऑल डिटेल्स दैट इज मेंशन ओवर हियर. नाउ कंसर्न की अगर बात करें, इंडियन हिमालयन रीजन में स्पेसिफिकली कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी, एंड दीज गोज बाय द नोटिफिकेशंस, जहाँ पे बाढ़ एरिया के साथ साथ जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उसको इधर करने की ज़रूरत है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं. इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशंस को भी नेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करनी है और स्टेट की जो रूल्स हैं, उस स्टेट की जो टोपोग्राफी है उसे भी देखना है. 2020 के ड्राफ्ट में काफ़ी हद तक चीज़ों को वर्स्ट किया है और डिस्टिंक्टिव रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है इंडियन हिमालयन रीजन के लिए. Now the way forward, its need mountain could be addressed with the 4 stages, जहाँ पे screening is the one, screening has to be taken into consideration, then scooping is the second, public consultation is widely required, and appraisal. All these 4 mechanisms can come together to ensure that EIA is fully functional in the Indian Himalayan region, right? और EIA के साथ साथ जो बॉक्स टिकिंग अप्रोच है उसे भी काम करने की ज़रूरत है. दैट कैन एक्चुअली गिव द रियल टाइम स्ट्रैटेजी. ये बॉक्स टिकिंग अप्रोच आप जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 एथिक्स पेपर में भी यूज़ कर पाएंगे. पॉलिसी मेकर शुड कम अप विद द स्ट्रैटेजी जहाँ पे वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसकी जो फंडामेंटल टोपोग्राफी, जो फंडामेंटल पॉलिसीज़ हैं, दैट शुड बी कम विद द गाइडलाइन विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडरेंस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उस वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, दिस इन्वायरमेंटल प्रोन, और लैंडस्लाइड और हेवी रेन की वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं बिकॉज वी हैव बिन नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन विद द प्रॉपर EIA. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी. ना मूविंग अहेड विद द आंसर्स डिस्कशन फॉर द डे. कल के जो सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शंस और आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. फॉर द फर्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज बी. मैंने आपसे पूछा था CES के बारे में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. इसके ऑप्शन 1 करेक्ट है, द सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो चेक करिए आपने क्या करेक्ट मार्क किया. द सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे इज अबाउट द नियर बाय गैलेक्सी. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. मैंने आपसे गैलेक्टिक टाइप के बारे में पूछा था, सो चेक आउट फॉर द करेक्ट ऑप्शन. नाउ टुडेज MCQ फॉर प्रैक्टिस. पहला सवाल है, इट्स अबाउट द स्काउंडिंग रॉकेट्स. दिस आर डिजाइन्ड बाय द ऑर्बिटल स्पेस.
This counting rocket is used for scientific research and atmospheric studies. These are relatively low typical to the fuse. So check out for the correct option और अपने correct option हमें आप ABCD के format में comment section में ज़रूर बताएं. Now the second question of the day is about the United Nations Economic Social Commissions for Asia Pacific. ये actually में focus करती है political affair और security region, इस particular region के लिए. इसकी headquarter बैंकॉक में है. ये आपको बताना है इसमें कौन कौन से options correct हैं. You have to choose the correct option and write down in the comment section down below. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. आपकी कोई concern है, कोई सवाल है, कोई queries है about test series, admissions in program, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. और आप में से जो लोग civil services examination के prepare करें, put your all best possible efforts. Give your best, practice a lot many questions, participate in the question answer series. This will definitely help you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.